नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। डांग जिले के सुबीर तहसील स्थित सिविल रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुशासन में बदलता भारत, विकास, जन कल्याण और आत्मनिर्भरता की नई गाथा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डांग जिला पंचायत के प्रमुख श्री राजूभाई गमित उपस्थित रहे और उन्होंने स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में सफाई का कार्य, स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके पश्चात जिला प्रमुख ने सिविल रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्टाफ के साथ संवाद कर उपलब्ध सुविधाओं, सामने आ रही हैं समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। श्री राजूभाई गमित ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए तथा मरीजों को गुणवत्तापूर्वक उपचार और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में प्रशासन के साथ चर्चा की। आज रोज અમે જે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને પ્રધાનમંત્રી તરીકે જે 12 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, જેનું જે આજે સ્વચ્છતા અભિયાનનું સપનું હતું અને સાકાર કરવા માટે આખા દેશમાં સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે, એના અનુસંધાનમાં આજે અમે અહીં સુબીર ખાતે સુબીર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખશ્રી અને સંગઠનના મહામંત્રી બુધુભાઈ, મંડળના પ્રમુખ વિનેશભાઈ અને સંગઠન અને વહીવટની પાખની સાથે રહીને સુબીર ખાતે CHC પર અમે આજે સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ કરેલ છે। એની સાથે સાથે સિવિલની પણ અમે મુલાકાત લીધી છે। ત્યાં ઘણા બધા દર્દીઓ આવેલ હતા અને ડૉક્ટરોને પણ અમે કીધું છે કે ગમે તે કોઈ પણ મુશ્કેલી પડે તો અમને સંપર્ક કરજો, અમે ચોક્કસપણે તમને પણ મદદરૂપ થશું। એવી રીતે સ્વચ્છતા અભિયાનની સાથે સાથે દર્દીઓની પણ મુલાકાત અમે લીધેલ છે।